तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना रे तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना रे नैनों की चाल है Assalamualaikum, हमारी ख़वातीन और उनके हज़रात. Welcome to our new vlog, and I hope you guys are doing really well. So, guys, our day started off with nihari, which I absolutely love. And this is a Turkish breakfast. It's also called shakshuka. This was amazing, guys. And, guys, nihari is something when you eat it, you feel like a king. Exactly. And the meat in nihari, everything, it's so soft and so tender. It just absolutely just melts in your mouth. And, guys, nihari is incomplete without the extras like the green chili, the lemon, the ginger, the piyaz. That literally completes nihari. Exactly. And did you know the meaning of nihari actually? I actually found out recently. Nihari comes from the word nihar. Yes, exactly. It also means in Arabic morning. So this is basically the best way to start your morning off. Just start off with nihari. It's absolutely amazing with the homemade naan as well. तो खैर हमारे location उसके बाद थी Audley village, which is located in. It's located in the outskirts of southern Sydney in the Sutherland Shire. And guys, the drive to Audley village was so good. Just surrounded by trees, greenery, nature. It was such a peaceful drive. और हमारा सफ़र इतना मज़े का गुजरा बातें करते करते हमें पता ही नहीं चला कि घंटा कब गुजर गया. And it was an absolutely amazing drive, and it was beautiful to see the whole view and everything around. When we got there, we saw a boat shed, and they had boats, they had canoes, kayaks, and we really wanted Mama to experience them because she's never been on one before. But unfortunately, it was completely booked out. And guys, we were so sad because we really wanted to take Mama there, and she has never really experienced a boat in Australia. और हमने कहा यार ये क्या हो गया हमारे साथ, और फिर ये भी वहाँ पे चिल कर रहा था, कहते यार ये क्या हो गया तुम लोग के साथ. लेकिन खैर वहाँ पे सिंगल वाली अवेलेबल थी जो कि हमें नहीं चाहिए थी because we wanted to enjoy all together. But yeah, don't worry guys, next time when we go there, we'll definitely try one. इंशाल्लाह. तो गाइस आज मामा और मैं आए हैं अकेले, नहीं मजाक कर रहे हैं. वो हम लोग थोड़ा सा व्यू एंजॉय करने के लिए आए थे. और क्या कहती हैं आप इस व्यू के बारे में? अल्लाह की कुदरत है, बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं, बहुत प्यारी जगह है और बहुत सुकून है, बहुत ज़्यादा सुकून है और बहुत मज़ा आ रहा है. और प्यारे बहन भाइयों, आप लोग भी आए इस जगह पे और खूब इंजॉय करेंगे आप लोग. तो इंशाल्लाह आपको देख के मायूसी नहीं होगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा. और इस जगह की अच्छी बात यह है कि बहुत ही कन्वीनियंट जगह है. यहाँ पे आप अपने बच्चों को भी ला सकते हैं, पूरी फैमिली भी आ सकती है. और साथ ही देयर इज़ अ वॉशरूम हियर एज वेल. और ये छोटा सा पिकनिक एरिया जहाँ पे बारबेक्यू एरिया भी है, जहाँ पे लोगों ने इस वक्त कब्जा किया हुआ है. लेकिन खैर हम लोग इंजॉय करने आए. So guys, these are the name of 21 men on the marble tablet. Basically a World War I के दौरान बताए गए थे by the Ministry for Labor, and this stone was re-established in 2015. That's quite interesting. And guys, after that we decided to drive to the main picnic area. तो guys हम लोग finally Audley picnic area में पहुंच चुके हैं. And this is a very beautiful picnic area. यहाँ पे आपको व्यू भी नज़र आता है, आपको सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, और वहाँ पे सामने आपको पानी भी नज़र आ रहा है. So that's a good view. बाकी हम उधर आपको बैठ के दिखाते हैं. So guys, as we arrived at the park, we decided to find a spot near the river so we can enjoy that breeze coming through. And guys, we were feeling so hungry. Even though we had nihari for breakfast, it was a long drive, and by the end of it, we were feeling a bit hungry. So we had prepared kofte from home, and with that, there was Afghani kabli pulao, which we love, as you guys probably already know. And don't forget the salad, guys. The salad is always a must. The pulao, it just goes with it. And after that, guys, what is this? karak chai. Which is a must. तो गाइस यहाँ पे मैं और मामा अपनी चाय को एंजॉय कर रहे हैं.
और यहाँ पे बहुत सन्नाटा है, बहुत सुकून है। जंगल में हम लोग मंगल मनाने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है और बहुत सुकून है। और लास्ट टाइम ज़िंदगी में ये सुकून अच्छा लगता है। Now for the cinematics. चले नबी सरला मक्का से तलब हुई, सोए मुनतहा वो चले नबी सरला मक्का से सरला मक्का से तलब हुई, सोए मुनतहा वो चले नबी। ये कमाल हुस्न का मौजज़ा, ये फिराक हक भी न सह सका, सरला मक्का से तलब हुई, सूए मुंतहा वो चले नबी। शब महराज लिया अर्श बरी पर बुलवाए, शब महराज लिया अर्श बरी पर बुलवाए, सदमा हिजर खुदा से भी गवारा न हुआ सरला मक्का से तलब हुई, सुए मुंतहा वो चले नबी, सरला मक्का से तलब हुई, सुए मुंतहा वो चले नबी, सरला मक्का से तलब हुई, सुए मुंतहा वो चले नबी, सरला मक्का से तलब हुई, सुए मुंतहा वो चले नबी, सरला मक्का से तलब हुई, सुए मुंतहा वो चले नबी। कोई हद है उनके उरूज की, कोई हद है उनके उरूज की, अलगल उला। तो गाइस उम्मीद है सिनेमैटिक्स तो आपको पसंद आए ही होंगे। Let us know what you think of it. And guys, after that, the pigeons kept on coming to us, the birds kept on coming to us, so we started feeding them and they were literally like, I don't know आप लोगों को नजर आया था वीडियो में, लेकिन यार ये बहुत खुश थे, ठीक है ना यार, बार-बार आ रहे थे खाने के लिए ना। I swear. And guys, one more thing about this park is that the whole day the parking basically takes up to $12. Yeah, we were a little bit disappointed because $12 is a lot for parking, but after coming to the park, we actually thought it was worth it. Exactly. And this park has a beautiful walk, and after having the food we just went on and on for the walking and exploring the park, discovering it. And guys, if you go to this park, please don't feed the birds. हम लोगों ने उनको खाना खिलाया था, उसके बाद हमने देखा वहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ था कि 500 का फाइन है, and we were like, oh damn. Yeah, लेकिन खैर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तो बच के निकला है. But if you guys are in that area and if you guys see some birds, although they're very cute, just don't feed them. Guys, one thing I really liked about the park, there weren't too many people. It wasn't crowded at all, and it was so clean, like facilities, toilets, things like that. Everything was so clean, and it was such a huge area. You could do a picnic anywhere, you could do a barbecue anywhere, and there's a lot of walking that you can do. So overall, I think it's fantastic. So we made a quick burger and enjoyed that before sleeping. हमारा दूसरा दिन शुरू हुआ काफ़ी ज़्यादा कुकिंग के साथ, और यहाँ पे मामा बना रही थी हक्का नूडल्स, जहाँ पे कैरेट्स थे, कैप्सिकम थी, स्प्रिंग अनियन, अंडा, and this was the chicken which was getting fried and it looked so good and it tasted amazing. तो खैर आप लोग फिक्र ना करें, यहाँ पे मामा आपको रेसिपी बताएगी and enjoy. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। अल्लाह से उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी रहे खुश रहें। अच्छा, आज हमने बनाए हैं हक्का वेजिटेबल चिकन नूडल्स। तो उसमें हमने लिए 1.5 किलो नूडल्स, आपको नज़र आ गए होंगे। नीचे मैंने बॉईल करके डाले हुए, उसमें मैंने ब्लैक पेपर डाली है और थोड़ा सा नमक, सोया सॉस और सिरका थोड़ा सा। और फिर उसके बाद चिकन को मैरिनेट कर लिया था, बोनलेस चिकन है, और उसमें आपने कॉर्नफ्लोर, नमक, थोड़ा सा ब्लैक पेपर और थोड़ा सा पानी डाल के इसको आप मैरिनेट कर लें। और उसके बाद हमने वेजिटेबल्स ली और इसमें ये कैप्सिकम दोनों कलर्स के ले लें, उसको हल्का सा फ्राई कर लें। और साथ हमने ले लिया कैबेज को भी बारीक काट के
फ्राई कर लें। और फिर साथ हमने लिया गाजरें और प्याज, उसको इसी तरह छोटे छोटे काट के वो भी फ्राई कर लें। और अंडा वो भी फ्राई कर लें, बल्कि 2-3 अंडे ले लें आप, इसमें डाल दें और इसको सब डाल के ऊपर और फिर इसको अच्छा सा मिक्स कर लें। अब आपको बताते हैं खा के कि कैसे बने। The Hakka noodles are now ready, and guys, just have a look at this. You have capsicums, you have green and red capsicum, you have carrots in there, you have chicken, and it's topped up with black pepper and some eggs. So guys, let's try this and see how it is. So grab that, dig into the chicken, so soft. Chicken is literally so soft, and the taste is perfect. It's a 10 out of 10. Can't wait to finish this. ये नूडल्स हमारे घर में बहुत खाई जाते हैं, सबको बहुत पसंद है, छोटों को बड़ों को। तो वीक में तो एक बार जरूर बनते हैं। तो आप भी बनाएं, ट्राई करें और अपने घर वालों को खिलाएं। तो गाइस, इतने मज़ेदार नूडल्स खाने के बाद बारिश शुरू हो गई और हमने कोई ना कोई एक्टिविटी तो करनी थी। तो हमने ढूंढी एक इंडोर एक्टिविटी, which was बॉलिंग। तो गाइस, हम चले गए पैरामेटा बॉलिंग करने के लिए, और ये है पैरा लीग्स क्लब। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ है। यहाँ पे आप स्नूकर खेल सकते हो, यहाँ पे आप डार्ट्स खेल सकते हो। तो हमने सोचा बॉलिंग कर लेते हैं। ओके गाइस, हमारा मुकाबला शुरू हो गया। I'm QB and she is MB. So let's see who wins at the end. What do you guys think? Who will win? We'll find out soon. So guys, it was a pretty fun experience for us, and if you live there, make sure to try it out. Yeah guys, we really had fun bowling, and guess who won? अच्छा दोस्तों, तो गेम ख़त्म हो गई है और स्कोर आपको नज़र आ रहा होगा 126 to 61। तो लास्ट टाइम मैं हार गया था वाइफ से, आज मैं जीत गया हूँ। तो हार जीत लगी रहती है। Guys, that was because I was being too easy on him. Of course, of course. But anyways, उसके बाद we tried this punching machine, which was pretty cool as well. Yeah guys, I've never done this before, so I really wanted to do it, and turned out okay. So it was a pretty cool experience for the both of us, and for indoor activity especially, it is pretty fun. खैर, उसके बाद मगरिब का टाइम हो गया, तो हमने कहा क्यों ना मस्जिद जाके नमाज पढ़ी जाए। Yes guys, so we decided to go to the Auburn Gallipoli Masjid. ये सिडनी की सबसे खूबसूरत मस्जिद है, and guys, just look at that artwork and the calligraphy, just the fine detail. It's made by the Turkish community. They've actually built the mosque, and it's beautiful. It absolutely is, especially the view from the outside. It's surreal, and the people out there, they were super friendly and super nice. Yes guys, and after praying Maghrib, we decided to go for dinner, and we had smash and spice, which I've wanted to have for a while. So we decided to try a few items in the menu. Guys, the first burger that I had was a far out burger, and guys, this burger was so good. Now to start off, the buns were nicely steamed, nice and soft. The cheese was melted so good. The beef patty, they were grilled to perfection, and the onions were nice and caramelized. So guys, I highly recommend it. So guys, after that we had the loaded fries on the menu, and we are not going to lie, we were a little bit disappointed because they were super cold and very saucy. Yeah guys, the chips were literally soaked in so much sauce, it lost its crispiness. Now time to try the second burger, the original. So guys, we asked them to cut it to half. Have a look at this. Look at the melted cheese in this. This also has onions and lettuce. Okay, let's give this a go. This is so good. Guys, if you're looking for burgers in Sydney, this is a place to come. Guys, I hope you guys enjoyed today's video.
Please, if you haven't subscribed already, do subscribe and share this video. Hopefully see you in the next vlog. Allah Hafiz. Allah Hafiz.